Yes, sir. ओके, सी बेसिकली इसमें है क्या लॉजिक, मतलब होता क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेरे सर पास, एक मिनट, मैं डिवाइस चेंज कर रहा हूँ, बैटरी खत्म हो गई है फोन की। ओके ओके चलेगा। यस सर। सो बेसिकली यहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी at any concentration and molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution के सारे ions एक मोल में जितने भी ions होंगे all of them will be available and C concentrations पर C concentration पर उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ आयन जो डिसोसिएट होकर के निकल पाया है वही अवेलेबल रहेगा एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस and therefore their ratio is able to give us the degree of dissociation, or this is also able to give the degree of dissociation equivalent वाला, ठीक है। अच्छा एक चीज और होता है, there are three four major applications of this entire thing, ठीक है। application conduction cells, और सबसे पहला एप्लीकेशन जो इसका होता है वो है determination of thermodynamic data, determination of thermodynamic data, dynamic data, क्या क्या डेटा हमको इससे मिलता है, नंबर एक, anything like any product of water, any product of water, ठीक है। प्योर वाटर फेबली डिसोसिएटेड रहता है, फेबली डिसोसिएटेड होने की वजह से कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो रहेगा नॉर्मल वाटर दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट लो। उस कंडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं और फिर थोड़ा सा एसिड वगैरह डाल करके उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा करके मेजर करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस ऑफ कंडक्टिविटी जो आता है ना, इसके थ्रू हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करते हैं। I'll discuss one of the question, so you will get a better idea about it कि हम उस चीज को कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जस्ट
और क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं हम लोग. सो वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड, स्टेप 1 इज calculate or find calculate or find ionic mobility or we can say molar conductivity. Calculate or find molar conductivity of H plus and OH minus ions. ठीक है. Second step now what we do is, once we have this, we know that water के dissociations हैं. Water dissociates into equal amount of H3O plus and OH minus ions. Is that okay? And therefore ionic product जो होगा Kw, that is simply concentration of H3O plus into concentration of OH minus ion, or also concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus as source आपका of वॉइस क्रैक हो रहा है. both these ions is dissociation of water. ठीक है. So from here I can say that concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus is equal to root under Kw. ठीक है. And kappa conductance into 1000 into concentration of these ions. ठीक है. Maybe concentration of H3O plus ion
is equal to its mobility, sorry, ionic conductivity, that is molar conductivity of H3O plus. Is that okay? इससे conductance of H3O Yes. plus हमको मिल जाएगा. It will become K of K due to H3O plus will be equal to concentration of H3O plus ये फिर SI यूनिट में है और ये भी SI यूनिट में है. ठीक है, तो ये वाला आएगा, और नहीं तो ऊपर ये CGS में है और ये भी CGS में है, तो ऊपर में 1000 और ये मोलैरिटी जो होगी वो मोल्स पर लीटर में रहेगी. राइट नाउ, Yes. so kappa will simply be equal to concentration of this into lambda m H3O plus and obviously into 1000 रहेगा, into 1000. ठीक है, इससे कंडक्टेंस ऑफ K मिल H3O plus मिल जाएगा. Similarly, conductance of OH minus will be equal to concentration of OH minus into lambda m OH minus into 1000. Total conductance kappa is equal to kappa due to H3O plus kappa due to OH minus. Is that okay? Yes. So these two things will get added up. ये दोनों बराबर है and equal to root KW है, तो पहले तो खैर ये लिख लेते हैं H3O plus into lambda m H3O plus into 1000 plus concentration of OH minus lambda m OH minus into 1000. ठीक है, और यहाँ पर concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus is equal to root KW. So दोनों को root KW से हम लोग replace कर देंगे, then it will simply become, और साथ में ये 1000 भी बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा lambda m into H3O plus lambda m into OH minus. ठीक है, Yes. एंड अब अगर ये कंडक्टेंस हमको किसी तरीके से पता चल जाएगा, टोटल कंडक्टेंस, तो बाकी सारी चीजें, ये सिर्फ एक अननोन रहेगा, ये हमको पता चल गया है. यहाँ पर फाइंड या कैलकुलेट हमने कर लिया मोलर कंडक्टिविटी को. वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. Yes. अब यहाँ पर ये 1000 रहेगा कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 रहेगा, दैट विल बी ऑब्वियसली डिसाइडेड बाय व्हाट, the relationship between K and this. If K is in SI unit and lambda n is in SI unit, the relationship will look like this. ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं. Right now, K and lambda m H3O plus comma lambda m OH minus are in SI unit. ठीक है, और अगर ये SI यूनिट में नहीं है तो रिलेशनशिप कैसा दिखेगा, कापा इज इक्वल टू
root kW divided by 1000 into lambda m H3O plus lambda m OH minus. Is that okay? Yes, sir. And this is how we are going to calculate it. So I may kappa lambda is 3O plus lambda MOH minus RM CZS unit. ठीक है? Yes, sir. That is something which is there. Mm, uh, so the question is something like this: the conductance of pure water is 5.5 into 10 to the power minus 8 Simon per centimeter. What would be the resistance measured from sample of this water in a conductivity cell having cell constant of 0.2063 per centimeter.
इसको थोड़ा सा नंबर को चेंज कर दें to make it simpler. Maybe I can make it 0.22 per centimeter. ठीक है. और also calculate pKw and pH of pure water, and other information is given are lambda naught molar H3O plus is equal to 349.8 sin centimeter square per mole. Lambda naught molar OH minus is equal to 199.2 sin centimeter square per mole. So these are the two informations given to us. Based on this, we have to calculate the entire thing. So first part जो है इसमें we just have to find the resistance. Resistance is equal to या conductance is equal to 1 by resistance right now. So basically this conductance is specific conductance of water, right? Specific conductance of water or conductivity of water. Is this okay? I mean, from this information, this must be clear. This is unit of specific conductance. Am I right? Or it is kappa. So kappa of H2O is given to be this 5.5 into 10 to the power minus 8, which must be equal to 1 by R into Z star. Right? G star is cell constant. Therefore, R is equal to G star by kappa. 1 by R को G भी बोलते हैं. G star by kappa. So this will become 0.22 divided by 5.5 into 10 to the power minus 8. This will become 2 by 5 into 10 to the power 7.4, or simply resistance is equal to 4 into 10 to the power minus 6, sorry 10 to the power 6 ohm. ठीक है. This is first part of it. pKw and pH of water. If these things are known. So we have just derived the relationship on last page. This is the conductance, total conductance of pure water.
So K total or KH2O will be equal to root under KW into lambda molar H plus lambda molar OH minus H3O plus and OH minus. Is that okay? तो यहाँ पर 5.5 into 10 to the power minus 8 और साथ में यहाँ पर divided by 1000 भी रहेगा, isn't it? ये CGS units में है ये दोनों, so this has to be divided by 1000. SI unit में रहता तो ऊपर multiplied by 1000 रहता है anyway. So this is KW divided by 1000 into, we will substitute these two values 349.8 and 199.2. This will make 549. 349.8 plus 199.2 will make 549. Is that okay? So root KW is equal to 5.5 into 10 to the power minus 8 multiplied by 1000 divided by 549. ठीक है, 10 to the power minus 5 हो जाएगा, this will be 10 to the power minus 5, फिर यहाँ से 10 to the power minus 7 हो जाएगा, and this value will be 5.5 divided by 5.49 will be 1.01 into 10 to the power minus 7. ठीक है, root KW, therefore KW will be, in fact it is going to be less than this. ठीक है, so KW will simply be equal to 10 to the power minus 14. Therefore PKW will be equal to 14. KW आ गया, ये आ गया. What do we need now? We need pH of pure water. pH of pure water, knowing that concentration of KW is known, knowing that concentration of H2O and H3O plus and OH minus are equal, we can calculate from this directly. Is that okay? या फिर ऐसे नहीं करना है तो we can also calculate it by एक रास्ता तो ये इसी से डायरेक्टली है, दूसरा भी हमारे पास है. दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि
वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाउ मच? दैट्स 55.5 मोलर, राइट? कैसे कैलकुलेट होता है? 1000 gram in 1 liter, 1000 gram water molecules or water will be in 1 liter of water, ठीक है? 1000 gram का मतलब कितना मोल्स हो गया? And per liter, so this is simply, this number is 55.55, ठीक है? So molarity of water happens to be 55.55 molar. Is that okay? So molarity आ गया और मेरे पास conductance of water already है, तो ये molar conductivity of water when concentration is this much, मैं calculate कर सकता हूँ, and it will be equal to kappa into 1000 by molarity, ठीक है? This is in Celsius unit, this is also in Celsius unit, ठीक है? इसलिए multiplied by 1002 पर, एंड इसके थ्रू मैं लैम्डा m of H2O at this concentration कैलकुलेट कर सकता हूँ. At the same time lambda m not of H2O जो है that is also known to me through this information. इन दोनों का सम टोटल जो है that is nothing but molar conductivity of water at infinite dilution, right? Yes, sir. Lambda m OH minus. So इन दोनों के रेशियो से now lambda m H2 divided by lambda m naught H2 is going to give me alpha of H2O, ठीक है? और concentration of H3O plus क्या होगा? Concentration of water into alpha, isn't it? C alpha, ठीक है? So calculations थोड़े Yes, sir. होंगे, we can find it. This is the another way. Otherwise हमारे यहाँ पर pKw आ गया है. Kw is nothing but concentration of H3O plus का square, which is also equal to OH minus का square, ठीक है? इससे हम directly pH निकाल सकते हैं. So we have two alternate methods. We can use any one of them. So this is first application, thermodynamic data calculation. और B जो है वो है calculation of dissociation, degree of dissociation, and calculation of degree of dissociation and dissociation constant for weak electrolytes. And the key idea over here is by comparing delta M upon delta M naught, this is going to give me alpha,
degree of dissociation DOD. Similarly, equivalent upon lambda not equivalent, this is also going to give me alpha or DOD. ठीक है. So and इसी के बेसिस पर हमको कैलकुलेट करना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इसी के बेसिस पर आ जाएगा, राइट. यू हैव डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट हम आपने ढूंढा है थोड़ी देर पहले. सो यू नो दिस हाउ इट इज डन. हेलो हेलो. Yes, sir. Okay. Next thing is the third application is it's related to B only, slightly different. Find solubility product. Solubility product of sparingly soluble salts. ठीक है. अब AgCl, AgBr टाइप के जो सॉल्ट होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर में, बहुत ज्यादा बहुत कम डिजोल्व होते हैं. ठीक है. और उनका KSP कैलकुलेशन जो है ना, that can be done via this method. How we do it? जनरली इसमें ये रहता है कि हमको दो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. ठीक है. या दो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए. और जैसे AgCl है, AgCl अगर डिजोल्व हो रहा है वाटर में, it is going to create Ag plus ion and Cl minus ion. Now Ag plus ion and Cl minus ion के थ्रू जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हमको मिल रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, that is total specific conductance because of that dissolved Ag plus and Cl minus ions. That is known to me. Or if I have been given that information, and at the same time I have suppose molar conductivity of this AgCl solution. ठीक है. So दो information क्या क्या, kappa of this AgCl solution. ठीक है. और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे, lambda m of AgCl. Is that okay? अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास होते हैं तो मैं मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस ढूंढ सकता हूँ. द डिसॉल्व्ड Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयंस, they are related as
For sparingly soluble salts, it is related as हेलो यस। हाँ नैनो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे मैं बोल रहा था कि solubility product of sparingly soluble salts जो होते हैं that can be calculated by knowing these two informations और पहला इंफॉर्मेशन होता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एंड दूसरा चीज होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन दोनों से हमको मिलता क्या है तो वी नो दैट लैम्डा m जो होता है दैट इज रिलेटेड टू कापा थ्रू मोलैरिटी ठीक है और कंसंट्रेशन सो ऑब्वियसली अब ये SI दोनों रहेंगे तो नीचे 1000 रहेगा CGS दोनों रहेंगे तो ये ऊपर 1000 रहेगा ठीक है सो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दोनों CGS में है ठीक है अब यहाँ पर ये नॉर्मल रिलेशनशिप होती है हमारी यहाँ पर रिलेशनशिप जो होती है दे आर रिलेटेड लाइक दिस फॉर sparingly soluble salts it's like is equal to kappa into 1000 divided by the concentration of these sparingly soluble salts ठीक है where lambda naught m and kappa are in CGS unit C is in mole per liter या फिर lambda naught m is equal to kappa divided by 1000 C where lambda naught m and kappa are in SI unit and C is in mole per liter. Is that okay? So let us do one or two problems based on it. The specific conductivity of AgCl is 1.26 into 10 to the power minus 6 Simon centimeter square per mole and
ionic conductivity of Ag plus and Cl minus ions are 62 SCM square mole minus 1 and 76 S centimeters square minus 1 respectively. Determine KSP of AgCl. ठीक है? Would you like to try it? The C in above equation is simply the concentration of Ag plus and Cl minus ions dissolved in the solution. ठीक है? तो एक बार C आ गया आपका तो C square is going to be equal to KSP और for that matter C अगर आ गया तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप रहेगा उसको हम अप्लाई करके NKSP निकाल लेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये C है ठीक है और यहाँ पर Ag2Cl3 रहता मान लो तो ये इस तरीके से होता, राइट. This would have been 2, this would have been 3C, राइट. और फिर Yes, sir. C जो आता solubility हमारा उसके रेस्पेक्ट में हमारा ये रिलेशनशिप जो होता ये 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब दैट वुड इट वुड हैव बीन क्लोज टू 108C टू द पावर 5. सो इस तरीके से जो भी रिलेशनशिप रहेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे के कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. हेलो. Conductivity saturated aqueous solution of SrSO4 is 1.48 into 10 to the power minus 2 Simon per meter. Per meter, while that of water from which the solution was made is 1.5 into 10 to the power minus 4 Simon per meter. Limiting molar conductivity of Sr2 plus and SO4 2 minus ions are
meter square per mole and 1.6 into 10 to the power minus 2 centimeter square per mole respectively. So calculate KSP of SR ठीक है। यहाँ पर देखो कंडक्टिविटी ऑफ SrOS दिया, SrSO4 दिया हुआ है सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोले या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। यानी वाटर के अंदर हमने SrSO4 जितना डालना था डाल दिया, जितना डिजोल्व हो सकता था डाल दिया, और उसका हमें ये पता है, कंडक्टिविटी पता है, और साथ में प्योर वाटर का कंडक्टिविटी क्या है ये भी दिया हुआ है। इज दैट ओके? हेलो। सो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मतलब सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी? इट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर प्लस कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, as in conductivity of H plus and OH minus ions which are there due to water, presence of water, and then Sr2 plus and SO4 2 minus ions which are present there, right? ये चारों आयंस का के थ्रू जो कंडक्टिविटी होगी उसका सम टोटल इज द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें से दो आयन का सम टोटल ऑफ कंडक्टिविटी इज गिवन टू बी दिस। इज दैट ओके? यस सर। तो बाकी दो आयंस का सम टोटल अगर मुझे निकालना होगा, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ ओनली SrSO4, नॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन बट SrSO4 सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड by subtracting this value subtracting this value of water from this total value, isn't that? यस सर। ठीक है। सो इससे आपको कंडक्टिविटी ऑफ कापा ऑफ SrSO4 मिल जाएगा ओनली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मतलब ये दोनों का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो इससे हमको निकल जाएगा क्या, लैम्डा m नॉट ऑफ SrSO4। Is that okay? यस सर। And from this I can calculate the C solubility और S solubility, दोनों SI में है तो SI में इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई C, सॉरी कापा divided by 1000 into C. Is that okay? यस सर। Very good. So इससे आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं C को, और C कैलकुलेट हो गया तो KST। Is that okay? यस सर। अभी का लेक्चर कितने टाइम तक होगा? दो तीन चीजें और बतानी है मुझे, देन आई विल कंक्लूड। दो चीजें ये हो सर जाएगा, आफ्टरनून का कितने बजे होगा? और आफ्टरनून वाला तुम्हारा 5 साढ़े 5 से होगा।
Okay, sir. So far I discussed two things. First one is, the second application, second major uses of conductometric cell is conductometric titration. Uh, why this is used? Because acid-base normal volumetric titration requires a great level of precision and sensitivity while recording the equivalence point. Matlab, it's like when you are putting the base into a acid and you have a this indicator put into the titration vessel. Now suppose we are putting 1 ml at a time, and it's like it may happen that 22 point, yeah, 25 24.8 tak ml tak there is no change in color which has happened, but suddenly 25 ml mixing per you get a sharp change of color, uh, so अगर 25 पर हो रहा है and 25 1 ml but pipette के through just 25 control करना many a times becomes not so easy. What happens is you may overshoot by 25.2 sometimes or 25.1. ठीक है? So the precision is, or sorry, the precision or the sensitivity required uh, to conduct a volumetric titration is very high. You miss, you miss a equivalence point and the whole experiment is ruined. ठीक है? Suppose किसी रीजन से आपने जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वाले टाइम पे आपका ध्यान किसी वजह से भटका, आपका वो एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन इज वेस्ट. You have to reconduct the experiment. Whereas we have this conductometric titration, which is based on a different set of conductometric principle,
and over here a very less sensitivity or precision is required, and it can give us a more meaningful data, okay, regarding the equivalence point compared to the volumetric analysis. Therefore, experimentally, these conductometric titrations are of great use to us. I was then discussing that in why it is easy or why it is less sensitive, or you don't have to pay that great deal of attention in order to notice your equivalent point is the principle. Generally, suppose we have an acid of the form HB. HB is an acid which is being titrated against acid. This is titrated against AOH base. So if HB is an acid and it is put in water, it's going to furnish H3O plus and B minus. And when I'm going to put additional amount of AOH, or amount of AOH into the solution, the OH minus from base will combine with H3O plus from acid, and it will form H2O. H3O plus H3O plus from acid will combine with OH minus to form H2O. The conductivity of H3O plus cation is highest. In totality, what is happening when I am adding, I have a reservoir of H3O plus B minus, and I am putting AOH slowly and steadily. OH minus is combining with each molecule of H3O plus, which is getting transformed into H2O, and an extra with each OH minus ion. A plus ion is also entering into the solution. So the net effect is what? The H3O plus ion, each H3O plus ion is getting replaced by A plus ion. Conductivity of H3O plus ion, conductivity of H3O plus cation is highest. So no matter what A plus I am picking, the replacement, the replacement of H3O plus by A plus will surely decrease or diminish the conductivity of the solution. ठीक है, that is the conductivity will keep decreasing till all H3O plus is replaced by keep decreasing till all H3O plus is replaced by A plus. Once all H3O plus is exhausted, this is
our equivalence point after equivalence point valence point addition adding every extra AOH will add extra ions to the solution. Therefore, conductivity will increase. ठीक है. So basically हमको कैसा situation मिला? Initially मेरा कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो इंक्रीज करने लगेगा. सो डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज करने लगेगा. इज दैट ओके? Yes, sir. एंड दिस पॉइंट विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है ना? Yes, sir. This point will be equivalence point. Now point is, यहाँ पर convenience क्या है हमारे लिए? The point of convenience is you take any 2 point over here, you can draw a straight line, and you take any 2 point over here and you still get a straight line. These two will intersect at some common, these two lines will intersect at some common point, and that is your equivalence point. Now यहाँ पर precision की जरूरत नहीं है. You don't have to be very precise, accurate, close to equivalence point. You can measure any two before equivalence or any two instances after equivalence, and still you can have all the right informations in front of you. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, अभी के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ. अब कुछ है नहीं इसमें. I just have to discuss 7 different curves. ये हो गया strong acid, strong base titration, strong acid, strong base titration. ठीक है, या strong base strong acid titration भी इसी तरीके का होगा, दोनों का सेम रहेगा. sharp decreases. Strong acid weak base या weak acid strong base, इनका titration curve जो होगा that I'll discuss, and then weak acid weak base का titration curve I'll also discuss. ठीक है? Yes, sir. I'll discuss that in the evening, and with that this chapter will get concluded. तो 5 को होगा ना? हाँ हाँ, 5-6 के आसपास मैं बता दूंगा तुमको, हो सकता है पहले भी करना. Okay, sir. ठीक है, ओके.